Yesterday we had studied some methods in which we explore how to equation, and if y1 dot y2 dot, this equals to matrix whose x y1 component is 0, y2 is minus 4, here y1 is 1, and y2 is 0. Okay, so you can write this system of linear differential equation in matrix form like this: y1, y2. Okay. So here, suppose this is your system of linear differential equation. Okay, here what is your you can write here y prime that equals to ay, and here what is your a is matrix, that matrix is 0 minus 4 1 0. Okay, so this is your system of linear differential equation. Okay, so here if we try to find what is the eigenvalues of this system of equation. Okay, so okay, so here you have to find what is a minus lambda I that equals to 0. So this implies minus lambda minus 4, and here 1 minus lambda that equals to 0. So this implies lambda square plus 4 that equals to 0. So this implies lambda equals to plus minus plus minus 2i. Okay, so this is the eigenvalue of this matrix. Okay, so here the eigenvalues of A. So A has two eigenvalues, and that is plus minus 2i. And this is basically, you write, this is purely imaginary. Okay, this is purely imaginary. Okay, so you know that if we find corresponding these eigen values, we have find eigenvectors, and from that you construct the matrix P, and that matrix P is obtained by these eigenvectors. So here the eigenvectors are for plus 2i, this is 0 to 0, and for second minus 2i, this becomes this is 0 1. Okay, so and here what is your P inverse? So this is P inverse. If you try to find the inverse of that, this equals to this one. Okay, so and you know that what is your B? B is equals to, that is P inverse AP, and you use this form, and if we substitute this matrix A, P inverse, and P, so after multiplication, suppose you get this term. Okay, so this is 0 minus 2 and 2 and 0. Okay, this is for matrix P, and सर you पी know की that वैल्यू what कैसे है? क्या क्या बताएं? हेलो. सर वो पी की वैल्यू सर अच्छा सर 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 समझ में आ गया Okay, सर वो okay, टू okay, वन नहीं सर मारा okay, okay. So suppose this is your matrix B in standard form. You know that if your matrix B in case 4, if this matrix of this type, so you know that what is the solution and what is the behavior of that. Okay, so here we by using this transformation, your matrix B is of type this is standard form. This matrix B in your case 4. This is discussed in case 4. Okay, so here what is the general solution? So here the general solution is, so the general solution, in short, we can write what is the general solution. The general solution is yx is equals to basically the value of y1
and y2x, and this equals to here what is the if b if from this transformation what is your b equals to this thing, then what is your z prime is basically bz. This for this transformation your differential equation is introduced into this form z prime that equals to this thing. Okay, or you can write this is in suppose in the variable y, so this equals to suppose this thing. Okay, so here what is the value of your z1? So here this is z1 is basically what is the value here. So z1 dot this equals to z1 dot equals to here minus 2 z2, and what is the z2 dot, this equals to uh, 2 z1. Okay, so this is the solution. Okay, so here, if we have to find the general solution, so in general solution in the form of your y prime equals to ay, and what is the value of a here? So what is the value of a here? So from this, what is the value a? So if you try to find, if you multiply here, this becomes p. If you multiply it by p, pre-multiplication to both sides, this becomes pb. This equals to AP. Okay, and now if we post multiplication by P inverse, so this becomes PB P inverse. That solution is in the form of this A. Okay, and what is this? So this matrix is what is the solution is of this type. Okay, so here you can write this in the form this yx, this equals to y1 y2, and okay, so here we can write this equals to this is p, and b equals to this of that equals to cos of this 2x, and here minus sine of 2x, here sine 2x, and this is cos of 2x. This portion is already you have find when p equals to this thing, what is the exponential of bx. Exponential of bx is defined by this form. Okay, and then multiplied by p inverse. This is p inverse. Okay, so now this is what is your p is 2001, and this multiplied by cos of 2x minus sine of 2x, here sine 2x, here cos 2x, and then p inverse. What is the value of p inverse? Is half 001. Okay, so if you multiply this term, so you get if you multiply these two, so from first two you get this becomes 2 cos 2x. Okay, and here second term is minus sine 2x, here 0, this is sine 2x, and here cos 2x multiplied by half 001. Okay, and now if we multiply this, so you get what is your yx, this equals to this becomes okay, and this into basically what is your constant term, so you have also multiplied by this c. Okay, because okay, here c with the constant matrix. Okay, here c. Okay, so what is the solution is exponential of that into c. Exponential of that is value is p of that p inverse. Okay, from this you can find this value. So here if you multiply these two, so you सर वो फर्स्ट रो का सेकंड टर्म माइनस 2 sin 2x नहीं होगा? minus if you multiply here minus this is 2 sin 2x. 2 cos 2x and 0, and here minus 2. Okay, this is minus 2. Okay, ठीक है यहाँ नहीं सर नीचे नीचे यहाँ if you multiply here, this is 2 cos 2x and 0, so this is simply a minus 2 sin 2x, and okay, ठीक है okay. And now if you multiply these terms, so this becomes half से multiply करें, so this is equals to cos 2x. Okay, cos 2x, and this becomes 0, and here this becomes sin 2x. Okay, so this into this,
and this into minus 2. This becomes minus 2 sine 2x, and here half sine half sine 2x, and last one is cos 2x. And if you multiply by c, to suppose c is column vector c1, c2. So this is your general solution. Okay, and here c with the arbitrary constant, that is c1, c2. Okay, so from this you can find what is your y1x. So y1x is c1 cos of 2x minus 2 c2 sine of 2x. And what about solution is y2x? So y2x is half c1 sine 2x plus c2 cos 2x. Okay, so this is your final solution. So from these two, if we try to find what is the value of y1 square, and in terms of that, and here we know that इसकी क्या फॉर्म होगी, तो बेसिकली दिस इज यू फॉर प्योरली इमेजिनरी रूट्स हैं, तो दिस मीन्स ये आपके केस 4 में होंगे, और इसकी जो नेचर होगी वो आपके सर्कल और एलिप्टिकल family of curves आपको मिलेंगी. Okay, so this depends on which is a circle or ellipse. This we can find from these two solutions. Okay, so if we combine these two and try to find what is the nature, so here if we squaring this, so here y1 square plus, and this becomes c1 square cos square. So cos square plus sine square. So sine squaring this is 1 by 4. So here we adding 4y2 square. Okay, so what is the value of y1 square plus 4 times this? So this becomes cos square sine square, that equals to c1 square. This is c1 square. Similarly here, this is 4 of c2 square sine square, and this is 4 times this 4 of c2 square. So this becomes 4 c2 square. This is c2 square. Okay, so here if we adding these two, so here y1 square plus this is equals to c1 square plus c2 square. What about 2ab? So this becomes सर आवाज नहीं आ रही है. यस सर. यस सर. सर आवाज नहीं आ रही. This is 2 c1 c2 this is what's the value of that. Okay, so okay, so सर आवाज नहीं आ रही है आपकी. ओके, आवाज नहीं आ रही. नो सर, अभी आना स्टार्ट हुई है. बीच में से आपने क्या क्या बताया. ओके ओके, वो कॉल आ रहे थे शायद, इसलिए हो सकते हैं, शायद उसी कारण वो इंटरप्ट हो जाते हैं. ओके ओके, हेलो, हाँ बताएं. हेलो, रॉन्ग नंबर. ओके, तो यहाँ y1 स्क्वायर प्लस 4y2 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू एलिप्स की इक्वेशन ये आपके आ रही है. कैसे कैसे आपने फाइंड किया? बिकॉज y1 स्क्वायर और y2 स्क्वायर अगर आप इसको स्क्वायर करके ऐड कर लें, तो आप ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है c1 स्क्वायर प्लस c2 c1 स्क्वायर प्लस 4c2 स्क्वायर आ रहा है. नहीं 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 नहीं, नहीं. हम आपको करके दिखाते हैं. ओके, तो यहाँ स्पेस नहीं है, हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं. ओके, अच्छा, नेक्स्ट पेज. हाँ, क्या हो रहा है? कह रहे सही आ रहा था वो. क्या आपको 4 टाइम्स आ रहा है? तो क्या हम आप करके देखते हैं. ये सही है भाई, हमें वर्बली तो सही हमें दिख रहा है. अब आप भी देख लें एक बार, तो क्लियर कट दिख रहा है. इसमें ऐसा कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है. सर ठीक है, वो कर लेंगे, फिर आप प्रोसीड कीजिए.
ओके 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 ओके, ठीक है। तो फाइनली आप चेक कर लें आप, और Yes, यहाँ sir. देख लें इसकी वैल्यू जो है दैट इक्वल्स टू दिस थिंग। ओके, सो हियर finally you get y1 square plus 4 times y2 square, that equals to c1 square plus c2 square. Okay, so here this is an equation of ellipse, and here this a part, if we write in the form of x1 square by a1 square plus x2 square by b square equals to 1, if we write in this form, if we divide by this term, so this is your measure axis is this thing, because this value is greater than that, this c1 square plus c2 square by 4. Okay, so this thing, the nature of this family of ellipse is look like this thing here. This is a y1 and this is y2, and the curve is basically elliptical in shape, and the phase portrait of this system of equation. Okay, so here the major axis is your y1, because this denominator term, this is greater than this thing. Okay, so this is your elliptical in shape. Okay, so here okay, so from case 4, uh, this is your basically the nature and rough sketch of that system of differential equation. Okay, so you can find the solution, and also you can find what is the nature of that phase portrait of your family of curve. So similarly we can okay, तो फाइनली हम जिस्ट अगर हम दे दें कि अब तक हमने जो सारे केसेस में जो डिस्कस किए, उसमें हमारे नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट क्या है और उस पॉइंट पे स्टेबिलिटी क्या है। ओके, तो एक हम शॉर्ट फॉर्म में आपको एक टेबल हम आपको देते हैं। तो हम नेक्स्ट पेज पे करें, इस पेज की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हम नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं सीधे। और ये पोर्शन तो आपका चूंकि प्रीवियस प्रॉब्लम की है। ओके, सो हियर if we draw the what is the nature of your eigenvalues, or if you can write roots of characteristic equation, and then what is the nature of critical point. So this is a 0 0, which is origin of linear system, and what is the stability at that point. So stability of critical point, that is origin 0 0. Okay, so if we write this in one platform, and here if we discuss some case, suppose case first, here if the roots are real, unequal, and of same size, okay, this means either positive or negative. So if the roots are real, unequal, and of same sign, so here this critical point is behave as a node, and stability at this is asymptotically stable if our roots are negative. Okay, and unstable, this is unstable if our roots are positive. Okay, and in second case, we have already discussed, this is when roots are real, unequal, and of opposite sign. Okay, so for this case, this point behave as a saddle point, and the nature of this point is always unstable.
Okay, so if these are real, unequal and of opposite sign, so this means this is unstable. So real and opposite sign है, this means कि वो unequal होंगे ही होंगे. Okay, and case third, when this is real and equal. Okay, so either these are both are negative or both are positive. Okay, so this means this behavior is as a node, and this is asymptotically stable if the roots are negative and unstable if roots are positive. If roots are positive. Okay, and case 4, if these are the complex number, so a plus ib, a plus minus ib, this means conjugate complex. So this becomes, if this is of type, the roots are conjugate complex but not purely imaginary. Okay, so in this case, your critical point is behave like spiral point, and here this is asymptotically stable if real part of roots means a is negative. Okay, and unstable if unstable कब होगा? Unstable if real part of roots is positive. Okay, so if this is a stable होगा spiral में when a is negative and a is positive, then unstable. And last, if this is a purely imaginary, in that case, if roots are purely imaginary, in that case, you point behave like a center, and this is stable. This center is always stable, okay, but not asymptotically stable. But not. Okay, so this is the final results when we compile all the four cases, and this is the final result. Okay, तो finally हमें यही चीज आपको बतानी थी, लेकिन इसके लिए हमने वो सारी चीजें आपको थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड में हम ले गए, डायरेक्ट सिस्टम में ले गए. मेन चीज यही है कि हमारे पास अगर ऐसी चीजें हैं तो ये सारी चीजें होती हैं. ओके, और कैसे हम ओरिजिन ही हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा, तो इसके लिए भी एक थोड़ा सा और एक ऑटोनोमस सिस्टम क्या होते हैं वो थोड़ा सा हम डिराइव करके देन हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे. ओके, तो क्विकली हम एक और रिजल्ट आपको दे दें, क्विकली एक रिजल्ट और हम आपको दें, फिर हम नेक्स्ट फिर प्रॉब्लम पे आते हैं. ओके, सो दिस इज फाइनल जिस्ट ऑफ आवर प्रीवियस 2 क्लासेस. ओके, पिछली 2 क्लासों का जिस्ट यही है कि ये सारी चीजें होती हैं, कि फाइनल रिजल्ट है आपकी. ओके, सो नेक्स्ट पेज here there is theorem, और हम इस पे प्रूफ पे हम नहीं जा रहे, हम सिर्फ आपको consider the linear system. Suppose if we take y1 prime that equals to a y1 plus b y2,
and second one is suppose y2 prime that equals to something c constant and d y2. So this is our system, and here if one thing is whole, that is the AD minus BC is non-zero. This means our matrix is non-similar. Okay, so that if this condition hold, if matrix is not similar, then our 0 0 is the only critical point. This is your critical point of the system, of the given system, of the above system. Okay, and here the first one is if both roots of characteristic equation are real and negative are conjugate complex with negative real parts. हमने क्या किया, पिछले टेबल से हमने देख लिया कहाँ कहाँ स्टेबल हो रहा है, तो उन सबको एक साथ हमने क्लब कर लिया. ओके, सो विथ नेगेटिव पार्ट्स, देन द क्रिटिकल पॉइंट which is 0 0 is asymptotically स्टेबल. ओके, तो आप टेबल में से देख लें राइट हैंड साइड में किन किन कंडीशन पे ये चीज आ रही थी, तो उन चीजों को हमने एक साथ क्लब कर लिया. सेकंड थिंग, सिमिलरली इफ द रूट्स of the roots are purely imaginary, then the critical point that is 0 0 is stable. Okay, but not asymptotically stable. This is fifth case. And third, if either of roots is real and positive, or if the roots are conjugate complex with the positive real part, then the critical point that is 0 0 is stable. Okay, तो ये आपकी थ्योरम है, उसकी प्रूफ आप ऐसे ही करेंगे, प्रूफ की कोई जरूरत भी नहीं है. हालांकि सारी चीजें आप देख ही रहे हो, ये सारी चीजें आपके टेबल से ही आई है, और ये सारी चीजें आपको पिछला सब कुछ आपको पता ही है कि कैसे ये चीजें, उसी चीज को ऐसे लिख दिया गया, इस प्रूफ जाने की जरूरत नहीं है. ओके, सो सपोज इफ our given system. हाँ सर ये लास्ट केस जो है इसमें द हाँ. क्रिटिकल पॉइंट 0 0 इज स्टेबल और अनस्टेबल. This is unstable. Okay, sir. Unstable. Okay, thank you. Unstable होगा भाई, हाँ. जल्दीबाजी में हमने उसको स्टेबल ही लिख दिया. ठीक है, अनस्टेबल कर दिया. ठीक है. ये तो स्टेबल है. दिस इज ओके. ठीक, अनस्टेबल. Okay, so if we given the autonomous
system, and if the system is defined as dy1 prime dx1 is suppose function of y1 and y2, and dy2 over dx is equals to another function of y1 and y2. So this is the system of autonomous system or differential equation. Okay, so here any point, if this is your autonomous system of differential equation, so here a point, हम करते क्या है कि ये ऑटोनॉमस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में ये y1 y2 का फंक्शन है, ये g1 और इसका फंक्शन है y g फंक्शन है, इन दोनों को हम क्या करते हैं इक्वेट कर लेते हैं जीरो पे, और यहाँ से हम दो सोल्यूशन हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी। ओके, तो चूंकि यहाँ पे हम दो ही ले रहे हैं तो यहाँ पे दो ही इक्वेशन आएंगी, अगर आपके 3 है तो 3 इक्वेशंस आएंगी, n है तो n इक्वेशंस आएंगी, उनको सॉल्व करके हम हर एक को जीरो करके हम y1 y2 y3 जो भी हैं उनकी वैल्यू देखते हैं कि किस पॉइंट पे सभी की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो जा रही है। ओके, तो दैट पॉइंट इज योर क्रिटिकल पॉइंट। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि अ पॉइंट suppose y1 0 and suppose y2 0, suppose these are the 2 points when this values is 0, so this at which both f, which is a y1 y2, or we can take at this point, so y1 0 and y2 0, this equals to 0, and your g at this point 1 0 and y2 0, this also equals to 0. So this is called critical point. This is called critical पॉइंट। ओके, तो पहला तो ये है कि हम किसी भी सिस्टम में हम देख लें कि यदि हमारा जो सिस्टम है अगर उसमें ये मैट्रिक्स जो है अगर AD माइनस BC नॉन जीरो है, उस केस में मेरा 0 0 मेरा ओनली क्रिटिकल पॉइंट होगा। ओके, बट जहां पर हमारा ये कंडीशन वैलिड ना हो उस केस में हमारे पास इन इक्वेशंस ऑटोनॉमस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करें और फाइंड करें कि किस वैल्यूज पे ये दोनों f एंड g मेरे क्या हो रहे हैं, जीरो है, और दैट नॉन जीरो पॉइंट इज योर क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो अगर ये क्रिटिकल पॉइंट हो गए जो कि नॉन जीरो पॉइंट है, तो आप सपोज आपके पास ये आपका जीरो है और हमने सारी स्टेबिलिटी हमने ओरिजिन पे ही पढ़ी है, सारी स्टेबिलिटी हमने सारे जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं सब ओरिजिन पे ही डिस्कस कर रहे हैं, और हमारा ये पॉइंट एक नया पॉइंट आ गया जो कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, तो हमने क्या किया अपनी ओरिजिन को ही यही शिफ्ट कर गए। ओके, बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर हम सारी चीजें हमें पता ही है कि ओरिजिन पे हम स्टेबिलिटी कैसे हम देखते हैं। तो दो केसेस है, या तो आपके पास ये चीज होगी AD माइनस BC नॉन इक्वल टू 0, उस केस में ओरिजिन ही आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा और उसमें आप ये सारी थियरी आप यूज कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये कंडीशन वैलिड ना हो, उस केस में आप क्या करेंगे इस ऑटोनॉमस सिस्टम इक्वेशन को इक्वल टू 0 करके आपने अलग क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, दैट क्रिटिकल पॉइंट इज नॉन जीरो, सपोज दैट इज योर न्यू वन क्रिटिकल पॉइंट y1 0 एंड y2 0। अब आप क्या करो अपनी ओरिजिन को यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आपने यहाँ से यहाँ को शिफ्ट कर ली। ओके, सो ये आपका ये ओरिजिन हो गई, और आपका नया सिस्टम जो होगा वहां पे आप ये सारी स्टेबिलिटी आप वहां डिस्कस कर लें। ओके, तो आप ये चाहें तो दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, किसके लिए होगा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ सिस्टम ए। ओके, सो क्रिटिकल पॉइंट दिस इज क्रिटिकल पॉइंट of equation A. Okay, so here you can write here, so for convenience we shall take the critical point, this y1 0 and y2 0, this critical point to be the origin, that is 0 0. So there is no loss in the length doing this. Okay, सर ये जो आपने लिखा है पॉइंट ये y10 y20 है क्या? y20 है, 20 है, y10 20 10 20 है। ओके, ठीक है, 10 20, तो 10 20 ना पढ़े उसे 10 20, बिकॉज इस दैट पॉइंट दिस फंक्शनल वैल्यू इज 0। ओके,
तो जैसे हम x और x नॉट लिखते हैं ना, तो वैसे y1 नॉट और 2 नॉट, ओके, तो इसलिए हम लिख रहे हैं। So this is origin, and there is no loss of generality in doing this. So for this, if suppose if this point y1 0 and y2 0, if these 2 point is not equals to 0, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रांसलेशन यूज कर सकते हो आप, एंड then the translation ट्रांसफॉर्म हम कर सकते हैं, या ट्रांसलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, ट्रांसलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आपने जाई को ले लिया, आपने क्या y1 माइनस y1 0, और एक अलग ट्रांसलेशन कर लिया ईटा, दैट इक्वल्स टू y2 माइनस y2 0। ओके, तो इस ट्रांसलेशन से क्या होंगे, आपका जो सिस्टम है वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो आपका जो है कि अगर आपका दिस इज y1 प्लेन, दिस इज y2 प्लेन, तो आफ्टर ट्रांसलेशन जो नई ओरिजिन होगी, जो नया ओरिजिन होगा, तो दिस इज इन फ्रॉम जाई और ईटा प्लेन में आप इसको शिफ्ट कर लिया, दैट इज जो फॉर दिस प्लेन के लिए आपका ओरिजिन है, और यहाँ y1 y2 के लिए ये पॉइंट जो है दैट इज y1 0 2 0 है, बट इसके लिए जाई ईटा प्लेन के लिए क्या है, ओरिजिन है। ओके, तो ब्लैक कलर के पॉइंट ब्लैक के लिए है और रेड वाले इसके लिए है। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ट्रांसलेशन करके ओरिजिन को उस पॉइंट पे ले आओ, और बाकी स्टेबिलिटी आपको पता ही, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। ओके, तो कुछ एग्जांपल हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे, और एक सिंपल एग्जांपल करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पेज, so determine the nature of critical point zero zero of the system. The system is 2y1 that equals to 2y1 minus 7y2, and say dy2 over dx is equals to 3y1 8y2, and determine whether or not the point is stable. Okay, so you have to find the इस क्रिटिकल पॉइंट हमारे क्या होंगे, पहले तो वो आपको बताना उसका नेचर क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट का, और दूसरा कि इस पॉइंट पे उनका स्टेबिलिटी क्या होगी। तो दो चीजें हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम जो है दैट सिस्टम इज डिफाइंड बाय लाइक दिस ए वाई, और जहाँ पे आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इज 2 3 एंड हियर दिस इज 2 minus 7 2 minus 7 and 3 minus 8। ओके, तो अगर हम इसको देखें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ए, दिस इज -16 + 28, दिस इज 5, दैट नॉट इक्वल्स टू 0, दिस मींस 0 0 भी द क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ हालांकि इन्होंने दे भी रखा है कि 0 0 आपका क्रिटिकल पॉइंट है, न भी देता सिर्फ कहता कि फाइंड द नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द सिस्टम। ये चीज अगर हम बता देते 0 0, तो ये चीज तो आपने यहाँ से आप देख सकते हो, ड्यू टू दिस ये आपके 0 0 home। Okay, so you can write here 0 0 is the critical point. This is the critical point of the given system. Okay, so here we have to find what is the eigenvalues, so that equals to 0, and here if we try to find this equals to lambda square plus 6 lambda plus 5, that equals to 0.
So here this is +1 and +5, so this becomes λ1 equals to -5 and λ2, this is -1. Okay, so since both eigenvalues are negative, so since the roots of characteristic equation are, these are the real, unequal, and of same sign, okay, so that is both negative, so we conclude that the critical point that is 0 0 is node. Okay, तो ये आप देखें तो आपको मालूम है कि अगर ऐसी चीजें हैं तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट कैसा होगा, इसका नेचर क्या है, तो दैट नेचर इज node. Okay, so then you have to find what is the stability about that point. Okay, तो आपको ये भी नेक्स्ट भी मालूम है कि since the roots are real and negative, so the point is asymptotically stable. ओके, तो यहाँ पर तो सिर्फ ये था कि अगर वो रूट्स हमारे रियल हो, अनइक्वल हो, ओके, आप सेम साइन, जरूरी नहीं कि ये यहाँ ये चीज देना, क्योंकि सेम साइन है तो वो हमारे नोड होंगे ही होंगे, आइदर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो नोड हमारा होगा ही होगा, और अगर वो नेगेटिव है तो वो क्या होगा मेरा स्टेबल होगा, ठीक है, दिस फॉर स्टेबिलिटी। तो अगर वो पूछता है कि वो स्टेबल है या नहीं तो आप इस तरह से बताएं। ओके, तो एक नेक्स्ट पेज पे एक प्रॉब्लम और देखते हैं। नेक्स्ट पेज, so determine the nature of critical point, okay, of the system, and if system is dy1 dx is 2y1 4y2 y1 plus 6y2, okay, and determine whether it's stable or not. Okay, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपकी जो मैट्रिक्स है दैट इज y प्राइम दैट इक्वल्स टू ay, तो यहाँ a जो है वो मैट्रिक्स है दिस इज 2 4 -2 6। ओके, तो अगर डिटरमिनेंट देखें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 12 माइनस प्लस, ओके, तो ये भी आपकी नॉन जीरो ही आ रही है, तो नॉन जीरो आ रही है, दिस मींस 0 0 ही क्रिटिकल पॉइंट होंगे। ओके, तो 0 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट। ओके, सपोज अगर ऐसा हो कि सपोज मल्टीप्लाई करने पे सपोज इफ दिस इक्वल्स टू सपोज 0 आ जाए, ओके, सो mod इक्वल्स टू 0, mod इक्वल्स टू 0, तो इस केस में हमारा जो है वो 0 0
क्रिटिकल पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते। ओके, तो ये चीज कैसे क्लियर होगी आपको कि ये जो सिस्टम है, जो आपका y1 प्राइम जो आपने लिखा है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ y1 y2, और here y2 prime, this y2 prime, this equals to function of y1 and y2। तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों को जीरो करना होगा एंड ट्राई टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1 and y2 which satisfies this equation। okay, or this point is denoted by your y1 0 and y2 0। okay, तो सपोज कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि हम ये इसकी वैल्यू जो है वो 0 0 भी आ सकती है, आइदर 0 0 आए या ये आए। तो 0 0 आती है तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपको यूज नहीं करना, और अगर ये इस तरह से चीजें आती हैं तो आपको अपनी इक्वेशन को चेंज करना होगा इन फॉर्म ऑफ xi and eta। ओके, तो उस केस में आप ये जो सिस्टम है, इनको लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, इनको आप सॉल्व करिए इक्वल्स टू 0 करके एंड ट्राई टू फाइंड द y1 y2 value। for that value this equation equals to 0, and for that y1 y2 that equals to 0, so that is your critical point। okay, तो इस केस में हमारा बाय चांस ये नॉन जीरो है, तो इसमें तो आपका 0 0 ही क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 करके आप निकाल लें कि व्हाट इज द this becomes 4 minus 2 6 minus lambda, this becomes lambda square and lambda plus 20। okay, so this equals to 0। so here what is the lambda 1, so lambda 1 is b minus b plus minus 4 square, b square minus 4 is c। okay, so 4 this plus minus 2 becomes आएगा सर। plus minus 2i। okay, so 4 plus minus 2। this is okay, so this is lambda 1 plus 2i and what is lambda 2, second eigen root is this thing। तो यहाँ पे आप देखें कि ये रूट्स जो है हमारे कुछ a plus minus ib फॉर्म में है। e हमारा क्या है, रियल पार्ट अगर हमारा, ठीक है, तो अगर वो पहली चीज तो ये कि अगर वो हमारे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो इस केस में आप कहेंगे कि क्योंकि ये रूट्स हमारे क्या है, सिंस रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक, सो दिस मींस इनका नेचर क्या होगा, तो स्पाइरल होगा। पहली चीज नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ जो क्रिटिकल पॉइंट स्पाइरल। क्यों, क्योंकि हमारा रूट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स से कॉन्जुगेट है। अब ये स्पाइरल हमारे स्टेबल होंगे कि अनस्टेबल होंगे, दिस डिपेंड्स ऑन रियल पार्ट। रियल पार्ट हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0, तो दिस स्पाइरल होगा और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा, स्टेबल इसलिए होगा ड्यू टू a जो है वो क्या है मेरा ग्रेटर देन 0 है। a यहाँ पे क्या है 4, दैट इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो रूट, तो नेचर जो है क्रिटिकल पॉइंट जो होगा वो नेचर क्या है, स्पाइरल होगा, और स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, अनस्टेबल होगी। तो ये आप ऐसे आप बता सकते हो, ठीक है। और जहां पर ये हमारे डिटरमिनेंट 0 होंगे, उस केस में आपको फिर इन दोनों को अलग से सॉल्व करना होगा, और वहां पे आप कोई पॉइंट्स निकालने होंगे। उस पॉइंट्स को आपको देखना होगा कि वो 0 आ रहे हैं या कुछ और आ रहे हैं। तो कुछ और आ रहे हैं तो वहां पे आपको अपने इस यूज ट्रांसफॉर्मेशन करके वो आपको ओरिजिन को वहां शिफ्ट कर लेनी है, और फिर बिल्कुल सिमिलर पैरेलल वे में वैसे आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन सर करा दीजिए ना सर इस पे भी। ओके, अभी हम देखते हैं, अभी एग्जैक्टली अभी तो हमारे पास है नहीं, हम आपको दे देंगे उस पे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दे देंगे। उसमें सभी लोग कनेक्ट हो गए। हमने कल भी पूछा था कि वो जो व्हाट्सएप ग्रुप आपने क्रिएट किया है डिफरेंशियल इक्वेशन के जो व्हाट्सएप ग्रुप आपने बनाए हैं, उसमें क्या सभी स्टूडेंट कनेक्ट हो गए? तो फिर हम उस पे मटेरियल सेंड करना स्टार्ट करें। नो सर। हाँ, तो उसको एक बार आप करके हम इन्फॉर्म करें कि जब वो आपका पूरा, जब सभी लोग कनेक्ट हो जाए उसमें, जो आपका बैच है, तो जब इस हो जाए तो एक हमें उसी व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दें कि ओके सभी लोग कनेक्ट हो गए, उसमें सभी लोग आ गए, तो हम उस पे मटेरियल आपको भेजना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जिस दिन से हो जाएंगे उस दिन से हम स्टार्ट करेंगे उस पे आपको मटेरियल सेंड करना, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आप देखिए, खुद से बना लो, कोई प्रॉब्लम बना के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसा कर लो कि यहाँ मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जा रहा हो, खुद से करिए, ठीक है। क्योंकि टाइम अभी 56 हो गए हैं, 11 बजे से मेरी दूसरी क्लास है, आपकी भी होगी। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। सही है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के क्वेश्चन है सही।
नहीं 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 नहीं। इसे तो कोई पहली चीज तो ये है कि व्हाट इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड व्हाट इज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इन दो चीजों में तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अभी तो हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम तो अभी तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। हमने तो कुछ यूनिकनेस एग्जिस्टेंस के लिए हमने सिर्फ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम लेके चली, और ये प्रॉब्लम में कोई भी इनिशियल कंडीशन तो गिवन ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये तो ना ये है ना तो ये है। ओके, ये तो सिंपल सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो कोई इसमें इनिशियल कंडीशन तो गिवन ही नहीं है कहीं पर। ओके, ठीक है। तो चलिए हम आपको प्रॉब्लम देंगे उसकी। 57 हो गए हैं। तो नेक्स्ट टर्न पे हम स्टेबिलिटी पोर्शन तो आपके पास इतना ही करिए। स्टेबिलिटी में अब हम चलेंगे नेक्स्ट फ्लोकेट स्टेबिलिटी। ओके, तो फ्लोकेट थ्योरी भी चलेंगे। फ्लोकेट व्हाट इज फ्लोकेट थ्योरी, फ्लोकेट थ्योरम एंड देन फ्लोकेट स्टेबिलिटी। ओके, तो स्टेबिलिटी एनालिसिस पे हम वहां पे चलेंगे। ये आपकी कंप्लीट एनालिसिस है, ये कंप्लीट एनालिसिस है। तो नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा सा तब तक आपके पास एक छोटा सा काम मैं दे रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप को आप अपना अपडेट करें। प्लस क्या करना है, उसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप को अपडेट करना है, और प्लस उसके साथ एक चीज और करनी है कि क्लासेस की जो टाइमिंग है वो बेसिकली हमारी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है। तो आप अपने टाइम टेबल देख लें, बाकी सारे टीचर्स का भी देख लें। और अगर आप हमें थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में अगर कुछ और एडिशनल कुछ टाइमिंग अगर आप एक एक घंटे किसी भी टाइम ये आपके ऊपर है दे दें, तो आपके कोर्स थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि हमारे थर्ड सेमेस्टर के 2 कोर्स रहता है। सर Thursday को- प्रोबेबिलिटी की क्लास रहती है। कोई दिक्कत नहीं थर्सडे है। को सर 10 बजे। थर्सडे को आप देखिए ये 3 सर दिन थर्सडे आपको लगेगा। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आप कभी भी इवनिंग दे दो। 4 से 5 दे दो, 5 से 6 दे दो, 6 से 7 दे दो, 7 से 8 दे दो, 8 से 9 दे दो। ठीक है, जो आपको टाइम समझ में आ रही हो। सर 7 से 8 से सही है सर। हाँ 7 से 8 सर हम डिस्कस Yes, करके sir. बता देंगे। ठीक है, जो भी आप Yes, तो sir. अपना ग्रुप पर डिस्कस कर लेंगे आप शाम में 7 से 8 पढ़ना हो, ठीक है, रात में पढ़नी हो, जो भी आपको सूट करता हो। क्योंकि हमारे जो है अब कोर्स हमारे थर्ड सेमेस्टर के जो 2 कोर्सेज हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग और ऑपरेशन उसमें आपके स्टैटिक्स कंप्यूटिंग के, हमारे थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन स्टार्ट है। तो हमारी क्लास अब खत्म है। वहाँ 2 सेमेस्टर की 2 पेपर हमारे खत्म हो रहे। तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट ईयर क्लास बच रही है, आपकी और एक दूसरी कंप्यूटेशनल साइंस की। ओके, सर संडे तो को सुबह क्लास लगा दीजिए। सर शाम पे ले लीजिए सर। आप डिस्कस कर लीजिए। आप अपने प्लेटफॉर्म पे आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है ना, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे करके हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। हमारे लिए बेहतर होगा कि अगर आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे जो भी आप हमें टाइम देंगे, जो भी करेंगे, हम बिल्कुल फ्री हैं। क्योंकि हमारे पास अब सिर्फ 2 ही क्लासेस हैं फर्स्ट ईयर की। तो हमारे पास अब सफिशिएंट टाइम है फर्स्ट ईयर के लिए। चाहिए ना। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की तो रेगुलर टाइम पे होगी ही होगी। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे जो आपको सूट करता हो, 4 दिन नहीं 2 दिन, जो भी आपको सूट करता हो, वो अपना डिस्कस करके हमें बता दें, हम उस पे ले लेंगे। कुछ भी डिस्कस करके अगर आपको फाइनल नहीं होता है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। हम उन्हीं 3 दिनों में ही कोशिश करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू टू ऑल।